welcome to the global channel. I am Gunjan and from today onwards I'll be teaching you geography. It's a very beautiful subject and very interesting subject. So let's start. What does geography means? What does this beautiful word means? At school level we have studied this. Geo means the earth and graphy means study. In total, we can say the study of the earth. Or if we say in something extra, it means formation of landforms. How this earth behaves, what is the nature of the earth, how it looks from inside and how it looks from outside. So we'll study all these things slowly. Now let's start. Let's see the branches of geography. It has two branches. One is physical and another is human geography. Physical geography and human geography. Human geography, all the things which are man-made. For example, we will study in this population, gender, population, rural areas, urban areas. Physical geography has three branches: geomorphology, next we have oceanography, and third we have climatology. So one by one we'll start with all these things. We'll complete these. So first we'll do with geomorphology. Very interesting, very easy, and you will grab it very early also. You will learn how easy all these things are. So now let's start with geomorphology. From basic to the high level we'll cover in geography. So let's start with geomorphology. So what does this word mean? Geomorphology. Geo, we everyone knows, means the earth. Morpho or morpha means change. So change in the earth. How this earth has evolved from a small particle to a huge planet where we live today. So how this has been changed from a small to a huge? What was the evolution that happened in this? So we'll do all those things. Next we have the development of landforms. How the landforms have developed, or how Earth is from inside and how it looks from outside, from the inner core to the outer magnetic field which exists up to the height of 36,000 kilometers. We'll see all those things. Now let's start with the first thing in geomorphology, that is internal structure of the earth. Of the earth. अर्थ अंदर से हमें कैसे दिखती है या कौन कौन से ऐसे आइडियाज आए हैं जो भी हमें पढ़ने हैं. कई बहुत ओल्ड आइडियाज हैं. फॉर एग्जाम्पल सम जोग्राफर्स सेज दैट अर्थ हैज 3 layers: Sial, Sima and Knife, or you can also say Nifi. Sial is made up of silicon and aluminium. Sima is made up of silicon and magnesium. So it is said that Sials are continents and Sima, that is silicon and magnesium, that is oceans. So out of this theory it is said that continents floats over oceans. So how is this possible? तो वही बात हो गई है कि अगर ओशन के ऊपर एक बोट चल रही है और अगर हाई टाइड आया या वेव आई तो उसको उसके साथ ही ले जाएगा. तो हाउ दिस इज पॉसिबल कि कॉन्टिनेंट ओशन के ऊपर फ्लोट कर रहा है? तो फिर ऐसा हो जाएगा कि एक बड़ी टाइड आई और वो कॉन्टिनेंट को अपने साथ लेके चली, या बड़ी वेव आई उसको अपने साथ लेके चली. टाइड ने उस कॉन्टिनेंट को ऊपर उठाया और नीचे कर. सो दिस वाज
declared as void कि नहीं, ये नहीं है. Now let's see. This is Sial, this is Sima, and this is Nifi or Nai. Sial, Sima, and Nai or Nifi. This is made up of silicon and aluminium. This is silicon plus magnesium. This is nickel plus iron. This is said to be that this is continent. ये कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे एंड ये हमारे ओशियंस हैं. ये हमारी कोर है. इग्नोर दिस. तो कॉन्टिनेंट्स फ्लोट ओवर ओशियंस. दिस इज ओशियन एंड ये कॉन्टिनेंट है. अब हाई टाइड आया, यहाँ से ये ऐसे उठी तो ये कॉन्टिनेंट भी ऊपर उठ जाएगा, और ये ऐसे नीचे गई तो इसने कॉन्टिनेंट को नीचे गिरा. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. पहले के टाइम पे ये एक्सेप्टेड थी, बट जैसे जैसे न्यू थ्योरीज आती गई इसको रिजेक्ट करते गए कि दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. सो द नेक्स्ट थ्योरी और द न्यू आइडिया दैट इज ऑफ क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. Okay, so new idea came. इसमें बोला गया कि अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 layers in 3 parts: crust, mantle and core. So let's see. This is crust, mantle and core. So it is said that crust is further divided into 2, mantle is further divided into 3, and core is further divided into 2. So crust is divided into continental crust and oceanic crust. Continental crust and oceanic crust. Mantle is further divided into upper mantle, middle mantle, or we can also say it as inner mantle. And at the last we have lower mantle. And core is divided into outer core and inner core. Outer core, inner core. Now, अभी हम बाद में in later lectures we will study कि जो हमारा continental crust है ये lighter होता है as compared to oceanic crust. Therefore, जो continental crust होती है वो कभी भी sink नहीं करती है, हमेशा ओशनिक क्रस्ट सिंक करेगी बिकॉज ये हैवियर होती है. तो जो हैवी होता है वो नीचे रह जाता है और जो हल्का होता है वो ऊपर उठता है. नेक्स्ट हमारे पास हम लेटेस्ट स्टडीज में ये भी पढ़ेंगे जो हमारी कोर होती है. इसकी जो 2 पार्ट्स है, आउटर कोर एंड इनर कोर. तो आउटर कोर इज इन प्लाज्मा स्टेट. तो इसके अंदर हमारे पास आयन्स होते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट वी हैव इनर कोर, जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट द सॉलिड पार्ट है ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर. तो अगर ये पूछा है कि अर्थ का सबसे ज़्यादा सॉलिड पार्ट कौन सा है, सो दैट इज द इनर कोर. तो अब यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड आफ्टर दिस अब हम अर्थ का एक लेआउट करते हैं कि अंदर से हमें अर्थ, हम कितने डेप्थ तक हमें अर्थ क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन है, एट व्हाट डेप्थ इट विल गिव अस द इंफॉर्मेशन. ओके,
Okay, so let's start with the layout of the internal structure of the Earth. So we have the crust. This is the continental crust, and this is the oceanic crust. Yes, let me write it here. Oceanic crust. It is made up of basalt, therefore it is heavier than continental crust. It is heavy. Its thickness is 1 to 3 kilometers, whereas its density is 3 to 3.5 grams per centimeter cube, which is more than continental crust. So let's see, continents are made up of granite, continental crust. So continents are made up of granite. These are light. ये बेसॉल्ट से और ओशनिक क्रस्ट से थोड़े हल्के होते हैं, therefore ये कभी सिंक नहीं करते. We'll study this later in the next topic. What's this nature? What's its nature is? So its thickness is from 30 to 70 kilometers, and its density is 2 to 2.5. Now we have some solid part of the upper mantle. We have some solid part of the upper mantle. This is the solid part. And these three zones are known as lithosphere, solid part of the upper mantle. Okay, so continental crust, oceanic crust and solid part of the upper mantle is known as lithosphere. This is known as lithosphere. It ranges till 100 kilometers. The next layer, which is very important and has some special properties, is the asthenosphere, which is semi-liquid or semi-solid. Some volcanoes also have their origin from asthenosphere. So this is asthenosphere. It has tendency to flow. Whenever pressure is applied on it from one direction, it will flow towards the another direction. It has semi-plastic properties, we can say. Semi-solid it is. Okay, so next we have middle mantle up to the depth of 700 to 900 kilometers. We have middle mantle. Okay, so we were talking about the density. So the upper mantle have the density of 4 to 5 gram per centimeter cube, and asthenosphere have from 5 to 7 gram per centimeter cube. Next we have middle mantle. It is also solid and it has the density of 9 to 11 gram per centimeter cube. Middle mantle. Next we have lower mantle. This is
lower mantle. It is in solid form and has the density of 11 to 13, or also you can say 14 gram per centimeter cube. Next, at the depth of 4800 kilometers, we have outer core. Its density varies from 15 to 17 gram per centimeter cube, and its property is that it is in semi-liquid form. It has many electrons in it जो rotate करते हैं continuously, they rotate, and इस चीज़ के कारण अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो पूरे अर्थ को सराउंड करती है up to a height of 36,000 kilometers from the earth's outer core. So this is very important. अगर ये नहीं होगी तो द इनर कोर और जो आउटर कोर में हमारे रोटेशन होती है वो नहीं होगा तो अंदर हमारा सॉलिड पार्ट वो स्टेबल नहीं रहेगा. रोटेशन नहीं होगी इसकी, जब रोटेशन इसकी नहीं होगी तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिसरप्ट हो जाएगी एंड जितना भी हमारा सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा. So this is the, I think, the most important layer of the core, that is the outer core, जिसमें हमारे पास सेमी लिक्विड एंड इसके अंदर वी हैव इलेक्ट्रॉन्स जो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बर्थ दे रहे हैं. द नेक्स्ट इज वी हैव दैट इज इनर कोर. इसकी डेंसिटी है फ्रॉम 17 टू 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, फ्रॉम 2900 टू 3000 डिग्री सेल्सियस हम कह सकते हैं. एंड दिस इज द मोस्ट हार्डेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज इनर कोर. सबसे ज़्यादा हार्ड सॉलिड इज द inner core. So we have done all these layers of the earth. First we have lithosphere, which is made up of continental crust, oceanic crust and some part of the upper mantle, which is in solid form, solid part of upper mantle. Next we have asthenosphere, which have olivine minerals in it. जब भी इन पे प्रेशर लगेगा दे हैव द प्रॉपर्टी टू फ्लो, दे हैव द टेंडेंसी टू फ्लो. यहाँ से प्रेशर लगेगा ये इस साइड को जाएंगे, या यहाँ पे प्रेशर लगेगा दे विल मूव टूवर्ड्स दिस साइड. मीन्स दे हैव द टेंडेंसी टू फ्लो. जहाँ पे प्रेशर लगेगा उसके ऑपोजिट दे विल मूव. नेक्स्ट वी हैव मिडल मेंटल, जिसकी वी हैव डन दिस डेंसिटी 9 to 11 grams per centimeter cube. This is up to the depth of 700 to 900 kilometers. Next, at a depth of 2900 kilometers, from 900 to 2900 kilometers, we have lower mantle, जिसकी further density है 11 to 13 or we can say 14 gram per centimeter cube. Next, we have outer core, जो semi liquid form में होती है, जिसके अंदर we have electrons और वो electrons कंटिन्यूसली चल रहे हैं एंड दिस इज द रीजन कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूस. नेक्स्ट वी हैव इनर कोर, जो सबसे ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में है एंड इसकी डेंसिटी है 17 टू 19 ग्राम पर सेंटीमीटर. सो दिस इज द लेआउट ऑफ द अर्थ फ्रॉम द surface to the core. So you can take the screenshot out of this. So this was all for today. So if you like this video, so please do comment, share and subscribe to my channel. Thank you so much.